Hmm. देशवादियों देशवादियों जिसने रहा है जगह अफगाना। ठीक है जी, चलिए भैया, लेट्स मूव। तो शुरू करो अंताक्षरी लिखकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। काम, वर्क, इकोनॉमी, मनी, बैंक्स, बैंक अकाउंट्स, लोन्स, इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टॉक मार्केट, GFC, Global Financial Crisis 2008, Obama, Obama, Trump and Biden. And now who else in 2024? Correct? 2008 to 2024. First term, second term, Trump third, Biden fourth. 4 into 4 is equal to 16. 2008 plus 16 is equal to 2024. So 16 years of governance or financial governance in one way or the another, uh, keeping US there in between. Z have arrived, Modi Z has arrived. As far as I know, even Emmanuel Macron has arrived as well. Correct? So we shall move. So what we say here is that like this. This is solar system, this is Earth, this is time, and here it was 2008, 2024. Behind it is 1991. Here we have got some nations: US, India, Japan, China. Solar system remains, Earth remains, time remains, space remains as well, and there people and polity as well. Correct? Although presidents do change. So we have seen Obama to Biden, वाजपेयी to मोदी, बीच में मनमोहन सिंह जी भी हैं. जापान, I know Shinzo Abe to Kishida. China, we have Xi Jinping, Emmanuel Macron. Correct? Then they have their policies. Correct? We take a stand against Pakistan and China. They take a stand against, they take a certain stand towards, if not against, China, India, Russia, and Japan takes stand. China, nuclear weapons, USA, Indo-Pacific. China takes a stand against US, Pakistan, Africa,
India, Russia, South China Sea. France takes what against I don't know what. European Union. Mm, Spain I have not heard of. Maybe a little bit of Germany, I guess. UK also maybe. Things like that. We have got also here Brexit 2016. UK's politics has been really turbulent. Two parties there, Labour and the Conservative. We have got three ones here, Rishi Sunak, Liz Truss and Boris Johnson. Previously, I guess it was David Cameron as well, if I remember right, and there was Theresa May too. So these are involved since 2016. More I don't know. We shall move. What we have discussed here is leaders, national leaders especially, and we have discussed countries. We have discussed a little bit about history as well. Chances are very high that we will certainly discuss one generation, that is 1919 to 2020, this last 30 years, especially this is because 1992 Soviet dissolution happened. It started from 1922, 70 years. Had Eastern Europe too, plus Central Asia. So that, I mean, it certainly had a decent amount of presence. So obviously we'll talk about geography or world map for that matter. IR is certainly going to be a case for us in which Africa obviously naturally will be discussed, Middle East as well. Here we have got Afghanistan, Iran, we have got Taliban here, we have also got Syria, things like that. Correct. So let us name a few countries. Uh, Afghanistan, Iran, some of the difficult ones. Syria, Yemen, Myanmar, North Korea, and Sudan. And what more we have? Turkey is kind of okay. Saudi Arabia is kind of okay as well. Mm, Nigeria. South Africa is again another country that is going to be crucial. It plays cricket as well. 10 big nations played. South Africa, there is especially Sena. New Zealand, Australia, England, South Africa. Plus Asian countries, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. 4 and 4, you've got 8. Then add West Indies, 9. Plus Afghanistan has started playing as well. Or anyone else? Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, India, West Indies, Afghanistan. And there are obviously naturally a few more like Ireland, Netherlands, and it has to be one more. It's missing. Which one is missing? खैर इतनी है तो इतनी बहुत है इसी में कर लो ठीक है 32 teams play FIFA. They are planning to increase it to 48. We shall see. So FIFA, CC, Hockey Federation, things like that. Obviously, we have got the Olympics as well.
So let's move then. So these are the troubled nations a little bit in one way or the another of IR. With that, we deal with P5, G7, and G20. G7's relevance is especially threatened now by Russia's invasion. Russia plus China combined, especially in that BRICS plus SCO, both of which are trying to increase their memberships. They have got largely NATO, which covers essentially Western Europe plus USA or EU for that matter and things like that. Essentially Europe. So we have got Europe, correct? This one, this my friend is very much crucial because this is where things have started, this is where things have gone back again as well, and this is where again things will start, and this is where things again will go back. So Europe is going to be a crucial juncture, especially now the Eurasia, because these two are interacting, Europe and Asia, correct? Certainly they are. So that is the case, and what more we will do, I'm not sure. I want to take a break now. Hmm. Oh. Chickadana, the chickadana, dana, upardana, the chickadana, chickadana. Okay, so let's move. Yep. So we have got Europe, right? It's like this actually. Europe is this. I mean, it's not like this very much. It's actually largely connected. Somewhere along these lines. Kind of this is the world map, more or less. Not very to the scale, but this landmass, this connected landmass, which is called Eurasia, and then obviously we have Africa, in which we have got the global south, global north as well. So these two are gonna merge
in one way or the another sooner or later, especially in that the relevance of UN and even the backdrop of it, UNSC. These two organizations certainly needs a decent amount of reform. How it will happen, we don't know. When it will happen, we don't know. What kind of changes will happen, we don't know. But we can look at some trends. But for that, obviously, naturally, very crucially, this has to be understood, obviously. है ना? We will take some time, but it has to happen. ठीक? यस कविता जी बताइए. बोलिए भाई. बस ऐसे ही सर, देखा कोई नहीं है. अच्छा, कोई बात नहीं, आजकल हम यही कर रहे हैं. तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है. वी कैन डिस्कस अराउंड इट अ लिटिल बिट. रीडिंग नहीं है तो रीडिंग नहीं होती तो वैसे भी कोई नहीं रहता है ना. बट आई थिंक मेरा थोड़ा सा मन यही है कि मैं अभी यही कर लूँ. अब पता नहीं आगे क्या होगा, वो तो पता नहीं. आज और अभी का तो मन यही है कि ये कर रहे हैं. बढ़िया चल रहा है सर. बढ़िया चलना चाहिए. तुम्हें बाय द वे ये सब पता है. यूरोप एंड अफ्रीका ये सब पता ही होगा. हम्म. हाँ माँ. तुमने देखा नहीं है. क्या नहीं देखा है. ये है साउथ अमेरिका. ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है, ये यूरोप है. झूठ बोलने को कोई फायदा नहीं है, तो बात सही है. ऑस्ट्रेलिया है, चाइना, इधर जापान है, रशिया. मैप वगैरह नहीं देखा तुमने. अच्छा, कुछ बढ़िया क्वेश्चन पूछो. लेट्स ट्राई अराउंड दैट. ये तो मैं कर ही रहा हूँ. पता नहीं कब तक करूँगा, नहीं करूँगा. आस्क ए क्वेश्चन. मैप तो देखा है ना. मैं कह रहा हूँ एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछो कोई. फिर देखते हैं हम लोग उसके अराउंड क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. डिंग 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 डिंग. अभी कुछ नहीं है माइंड में सर. अच्छा छोड़ो. फिर छोड़ो, फिर हम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं इसी के अराउंड ही. तो अच्छा, यूएन यूएनएससी इन सब के बारे में पता है तुम्हें कुछ. इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया के बारे में बात करी जाए. इंडिया, यूएन, यूएनएससी, चाइना, यूएस, इंडो पैसिफिक.
इंडिया में स्टेट्स हैं ऑब्वियसली बहुत सारे। इसमें स्टेट्स में अलग अलग पार्टी की सरकार है। बीजेपी की भी सरकार है, टीएमसी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार भी है, सीपीआई की सरकार भी है, डीएमके की है सरकार। और कहाँ कहाँ है? टीआरएस की है सरकार, तो बीआरएस हो गई अब। और डीएमके, ऑल इंडिया, एआईएडीएमके। तमिलनाडु की स्पेशल हिस्ट्री है एक। तमिलनाडु से जुड़ी हुई है श्रीलंका एंड श्रीलंकन तमिल्स। प्लस वहाँ पे बुद्धिस्ट भी है बहुत। श्रीलंका में फॉरेक्स का क्राइसिस आया ही था अभी। हम्बन टोटा पोर्ट बनाया गया था वहाँ पे। दैट इज बेसिकली टू इनसर्कल इंडिया, ऐसा माना जाता है। श्रीलंका में डेप्ट है कईयों का, इंडिया का भी है। मेरा ठीक है, तुम बताओ। जापान का भी है, चाइना का भी, और अब तो आईएमएफ भी वहां पर है प्रेजेंट। तो चार के लोन्स और श्रीलंका का डेप डिफॉल्ट। ठीक हो, वेरी गुड, ठीक रहना चाहिए जीवन में। तो एक बात हो सकती है श्रीलंका की, इंडिया और इंडिया का नेबरहुड तो रहेगा ही ना हमेशा ऑब्वियसली। इंडिया एंड इट्स, अभी तो यही चल रहा भैया, इंडिया और उसका नेबरहुड। ठीक है, उसमें श्रीलंका तो है ही है। श्रीलंका को लोन दिए बहुत सारे लोगों ने। एक आईएमएफ, चाइना, जापान और इंडिया। फॉरेक्स का वहां पे क्राइसिस हो गया था। मेडिसिन और फ्यूल्स का भी। पॉलिटिकली जो है वहां पर एक होता है आर्टिकल, अमेंडमेंट हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट ने पावर बहुत सारी ले ली थी अपने पास। तो पार्लियामेंट वहां पे फिर से रिस्टोर करने की जहां तक कोशिश की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन एंड थिंग्स लाइक दैट। इंडिया को जो है, सॉरी, इंडिया कह रहा हूँ, श्रीलंका को दो जो रिलेशनशिप्स हैं वो तो मैनेज करके चलना ही है, इंडिया से और चाइना से, और कुछ हद तक यूएस से भी। इंडो पैसिफिक में वो हैं, तो दे आर सर्टेनली गोना बी अ पार्ट ऑफ बॉक्सिंग रिंग। तो इतना तो है ही है ना। अब आगे क्या होगा वो नहीं पता। श्रीलंकन इकोनॉमी, श्रीलंकन पॉलिटी और श्रीलंका का, श्रीलंका जो है वो इंडिया के नेबरहुड में आता है। इंडिया के नेबरहुड में, एक्सटेंडेड नेबरहुड में ताइवान और म्यांमार और थाईलैंड और इवन इंडो पैसिफिक तो नेचुरली आता ही है। तो ये सब जो है वो चलेगा। ठीक।
यस। और बस आई थिंक इतना बहुत है।